Now today let's start with chapter number 50, means of transportation and communication. So in this chapter I will tell you about transportation, which is used to move from one place to another. If we talk about in ancient time, there was no such means of transportation. The people have to move on foot, they have to carry loads on their back and they go long distances, which was very time consuming, right? Then we have means of communication. What is communication? It's a process by which we express our views, ideas with other people, right? Now, let's study in the past time, people travel from place to place by bullock cart or horse cart. On many hours took a little distance, but today world seems very small, right? So, our major landmark was the invention of wheel. Since then, there have been many development as there is a result. Now you can see that many forms of transport which have made traveling fast and made the world smaller place, right? So there are three main means of transport: land transport, water transport, air transport. So we have land transport, which means a kind of transport that moves on land. We have roadways and railways both. So we can see for short distance we use bicycle, cycle, rickshaw, and for long distances we use scooter, car or buses. If we talk about in Mumbai and Chennai, people travel by train. So there are two kinds of land transport: road transport and rail transport. So the road network in the United States is the biggest. Now road transport this form of transport can be used for local as well as long distance, like bicycle, bus, your car, your scooter and your truck. And vehicle like car, buses, scooters, cycle, bullock carts, tractors, they move on roads. Big cities, they have different parts of country. They are linked with highways. There are good permanent roads in the cities and towns. Like we talk about the Grand Trunk Road, जो famous है, long distance road है, जो आपकी कोलकाता to पेशावर बनी है. It was built by Sher Shah. Apart from helping people to travel, they are also used for transporting goods. आपको goods transport करने हैं. आपको जो आपके गुड्स है ना, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजना है, तो आप किसका यूज करते हो? आप क्या लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करते हो. देयर आर सम रीजन व्हाई गुड्स हैव टू बी कैरीड. सर्टेन आइटम्स ऑफ फूड आर फाउंड ओनली इन सम स्टेट. जैसे एप्पल्स हो गए तो आपको हिली एरियाज में मिलेंगे, ऑरेंजेस आपको नागपुर वाले एरिया में मिलेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट आइटम्स. सो वी हैव रॉ मटेरियल ऑल्सो दैट इज नीडेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, राइट? एंड दे आर फाउंड in near factories. They have to be taken for manufacturing centers, and the finished product also have to be taken in the market. Army trucks and supplies have to be moved to broader areas, and we also have border roads, right? We have cab over engine truck, जो कब introduce हुआ था? 1959. Next is rail transport. It is a vast country and railways are major form of transport. So one of the largest network of railway is found in India. जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी वो आपकी मुंबई से थाने बनी थी 1853 में. रेलवेज आर वेरी यूजफुल टू अस, ट्रांसपोर्ट पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इजीएस्ट है, चीपेस्ट है और फास्टेस्ट है. कैरिंग बल्की गुड्स. इफ वी टॉक अबाउट ट्रेन, दे यूज डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन, एंड बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स. गुड ट्रेन्स जो गुड कैरी करती है, पैसेंजर ट्रेन्स जो पैसेंजर्स को कैरी करती है, एंड देन वी हैव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के आसपास हमें ले जाती है. लोकल ट्रेन्स करेक्ट सराउंडिंग्स ऑफ द सिटी, ऑफ द मेन सिटी. सुपर फास्ट ट्रेन जो क्या करती है, आपकी बड़ी सिटीज को, लाइक देहरादून एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये क्या है, आपकी बिग सिटीज को कनेक्ट करती है. मेट्रो ट्रेन, कोलकाता एंड दिल्ली मेट्रो है, यहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो है. कोलकाता जो थी वो फर्स्ट सिटी थी वेयर मेट्रो वाज फाउंड, राइट? व्हाट इट्स डू, इट्स रिड्यूस कंजक्शन. देखो ये पहले क्या था, ट्रैफिक पे जो रोड्स थी ना, उस पर ट्रैफिक हो जाता, बहुत ज्यादा कंजक्शन हो जाता. By the coming of metro, that congestion has been minimized. Toy trains. Small trains are found in hilly areas, regions, and the line between Darjeeling, Siliguri, Kalka, and Shimla, they are very popular. They are lovely sights, slow winding up to the mountains. Next is water transport. Means of transport like boats, ferries, ships, and steamers. They move on water like canals, rivers and ocean. Boats sail on small rivers. Ferries and steamers ये पॉपुलर्स है, आपको गंगाज और ब्रह्मपुत्र में देखेंगे. शिप जो होती है वो सीज और ओशन में सेल करती है. एंड पैसेंजर लाइनर दे कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर they give the facility of comfort liner, and people take luxury cruising on holidays on ships. कार्गो शिप बल्कि गुड्स को कैरी करती है. If we talk about ships जो food stuff कैरी करती है, like frozen fish, they have special arrangements.
जहाँ पे हम क्या करते हैं, आइटम को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं. टैंकर शिप, दे आर द बिग शिप जो ऑयल पेट्रोल कैरी करते हैं. नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, दे आर वाइडली यूज्ड टू ट्रैवल क्विकली over the long distance. Chief means of air transport, aeroplanes and helicopters. Right? At the time of any emergency or any drought condition, कोई आपका natural disaster आया है तो हम किसका यूज करते हैं? We use helicopters. Now plane carry large number of people, perishable goods like food items and other items like mail. Planes carry only goods, जिनको हम cargo planes carry. There are two types of airlines, domestic airline and international. So if we talk about domestic airlines, fly within a country, they use airports in the country. Our official national airline क्या है आपकी? Indian Airlines. ये private airlines है जैसे आपकी सहारा हो गई, Jet Airways हो गई, right? Air Deccan, Kingfisher और SpiceJet. International में आपकी जो भी international airlines है वो different country को all over the country, all over world क्या करते हैं? Connect करते हैं. Now helicopters are useful because they can land and take off in the small piece. They can turn around quickly. इनका हम यूज करते हैं रिमोट प्लेस. आर्मी वगैरह भी इनका यूज करते हैं फॉर ड्रॉप आउट ऑफ फूड्स आइटम्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी और अ नेचुरल डिजास्टर. कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स. हम फीलिंग्स को, थॉट्स को अमंग इंडिविजुअल एक्सचेंज कर रहे हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड टू कम्युनिकेट. इट इज बिकॉज वी आर इंटरलिंक्ड एंड वी नीड ईच अदर and that helps us to survive. So we can say animals too use means of communication with the help of different gestures and sound. वो क्या करते हैं? एक दूसरे से communicate करते हैं. So we can say that all these ways through which we share thoughts, send and receive messages and makes us use of information. It is called communication. So human beings need to communicate with each other. हम अपने क्या करते हैं? Information को, news को, ideas को exchange करते हैं. So in olden times, smoke signals, drum, pigeons and horse, they were the means of communication. They have made great progress, right? So later if we talk about, it is easiest and the most popular means of communication. We send letters, telegram, parcel, money orders. हम किससे भेजते हैं? By post office और courier service. Another popular means of communication, telephone. Today, cellular or mobile phones are convenient means of communication. We can also send a message through SMS. What we call it? Short messaging services. Satellite. A satellite phone is used in an area where there is no other means of communication. जिसको वो क्या होता है? Directly आपकी satellite से connected होता है, right? Next is phone can also have the voicemail service, so the message can be recorded. Another means of sending messages through pagers. The person with the pager can read the message but cannot send it. लेकिन उसको वापस भेज नहीं सकता. The computer has become common और ये highly developed means of communication है. With the help of internet आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं, राइट? वी कैन ऑल्सो यूज द कंप्यूटर टू सेंड मैसेज. आप ईमेल भेज सकते हो, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल, टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू एज मेनी पीपल एज यू वांट टू शेयर. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. दे हेल्प टू कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल. व्हाट दे प्रोवाइड? एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन. न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, दे आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. नाउ रोड सेफ्टी रूल्स. So many lives are lost due to road accident. They occur when people are careless. They don't know how to follow the rules. Driver and pedestrian, they do not follow rules. Here are some rules to remember. Children should not run. ना तो आपको